अस्सलाम वालेकुम आलम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू द थर्ड बैच। और इस CHP का हमारा आज पहला लेक्चर है। वी विल टॉक अबाउट द ब्लूम टैक्सोनॉमी टुडे। आई एम हजरत बिलाल मरकंडी। Basically, as a profession, I am a physical therapist. I am working there in Khyber Medical University. सो चलते हैं टुडेज लेक्चर ऑब्जेक्टिव की तरफ। By the end of this presentation, this lecture, students will be able to define the learning objectives, discuss the Bloom's taxonomy, the cognitive domain, discuss the Simpson taxonomy, psychomotor domain, discuss the Bloom taxonomy, affective domain, construct the learning objectives. हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले थोड़ी सी उसकी बात करेंगे कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव की डिफिनीशन क्या है, ये टर्म क्या है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पर बात करेंगे, इसके बेनिफिट्स पर बात करेंगे, but that will be general description on the learning objective. उसके बाद जो है हम लर्निंग की जो 3 डोमेन्स हैं उस पर बात करेंगे और इसकी एक एक लेवल को हम डिस्क्राइब करेंगे और उस लेवल को हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स हम डेली लाइफ, नॉन मेडिकल साइंसेस, नॉन हेल्थ साइंसेस से हम देंगे और साथ साथ जो हम मेडिकल एग्जांपल्स भी देंगे ईच एंड एवरी लेवल ऑफ दीज डोमेन्स। हम डोमेन को डिस्कस करेंगे जस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लेक्चर के एंड में हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव होगा दैट विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि हम कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन में हम हर एक लेवल जो है हम ऑब्जेक्टिव किस तरह बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस lecture. This is the learning objectives. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की सिंपल डेफिनेशन ये है कि द बिगिनिंग विद द एंड इन माइंड। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपल मीन, सपोज आई एम अ टीचर और मैं किसी भी क्लास, कोई भी टॉपिक, सपोज एनाटॉमी मैं टीच करने जा रहा हूँ और कोई भी टॉपिक है, दैट टॉपिक इज 1 आवर। अब मैं जो टॉपिक 1 घंटे के इनको पढ़ाऊंगा, सो मैं अपने स्टूडेंट से कुछ एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि इस 1 आवर के लेक्चर के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को ये आता होगा, मेरे स्टूडेंट को ये क्लियर होगा, मेरे स्टूडेंट ये करेंगे, मेरे स्टूडेंट। सो ये जो एंड वाला यानी एंड ऑफ दैट लेक्चर, ऑफ दैट सेशन जो हमारे माइंड में आता है, दैट इज एक्चुअली द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। सो वी कैन सिंपली से दैट learning objectives, these are the short, specific, brief statements which will describe what we are expecting from our students. लिटरेचर में इसकी बहुत वेरियंस डिफिनेशंस आ रही है। यहाँ से हम उसकी जो 2 बेसिक डिफिनेशन है और डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो है दैट इज व्हाट आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दे आर द स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टर्म्स। और यहाँ से ये दोनों जो हैं वर्ड्स स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, ये इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की जो प्रॉपर्टीज है ये बयान करते हैं कि ये स्पेसिफिक होगी। एंड द वर्ड स्पेसिफिक मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द गोल। एक हमारे जब हम अक्सर रिसर्च आर्टिकल देखते हैं, कोई भी हम प्लान जो बनाते हैं, तो उसकी हम लिखते हैं कि भाई द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो एम है ये एक्चुअली सिमिलर वर्ड फॉर द गोल। तो गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, अब गोल एंड ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है, हाउ वी कैन differentiate between the goal and the objective. The word specific is the main difference between the goal and the objective. किस तरह, सपोज इसी टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसका गोल अगर मैं बता दूं तो हमारा लर्निंग गोल ये होगा कि जो स्टूडेंट्स है, जो मेंबर्स हैं इस CHP थर्ड बैच की, कि वो जान सके अबाउट द ब्लूम टैक्सोनॉमी। दे लर्न द दे विल लर्न अबाउट द ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या चीज।
तो ये अब क्या इसके बारे में सीखेंगे, ये मैंने बयान नहीं किया, बस सिंपल मैंने कहा है कि भाई दैट शुड बी विल बी फेमिलियराइज्ड विद द ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसी को मैं ऑब्जेक्टिव किस तरह लिखूंगा कि इस सेशन, इस प्रेजेंटेशन के बाद, इस लेक्चर के बाद जो जो जितनी भी ये डॉक्टर्स हजरात है, ये क्या करेंगे, ये इनको 3 डिफरेंट डोमेन्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो 3 डोमेन्स है उसकी सब लेवल, और हर एक लेवल की जो एक्शन वर्ब अलॉन्ग विद एग्जांपल्स जो है, दे विल एबल टू डिस्क्राइब दिस। अब मैंने इसको स्पेसिफिक कर दिया कि इन ब्लूम टैक्सोनॉमी में इनको क्या क्या चाहिए होगा। तो यही एक, तो ये जो लेटर हमने डिस्क्राइब किया, दैट इज एक्चुअली आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। और जो स्टार्ट में हमने कहा कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल जस्ट टू नो अबाउट द ब्लूम टैक्सोनॉमी, दैट वाज अ गोल। सो गोल जो है दैट इज बेसिकली ब्रॉड टर्म्स में होता है, एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दे आर वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं, ये इसके बेनिफिट्स अगर हम बात कर ले तो ये टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल है एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए। टीचर की लिस्ट कि ये कंपास फॉर द टीचर के तौर पर काम करता है। ये स्टूडेंट जो टीचर है उसके लिए एक पाथवे प्रोवाइड करता है, तो उसको एक डायरेक्शन दिखाता है कि उसने क्या क्या कंटेंट जो है ये पढ़ाने हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, और किस लेवल को इनको पढ़ाना है। जबकि स्टूडेंट्स के लिए ये है कि ये उनके लिए एक मैप के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द सेशन, जब उनको पता होता है कि ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और ये मैंने अचीव करना है, और ये एग्जाम में जो कामयाबी है, जो सक्सेस है, उसके लिए ये अचीव करना ज़रूरी है, तो उसको पता होगा कि मुझे कौन कौन सी कंटेंट जो है ये इस पर काम करना है, और क्या क्या किस अंदाज से जो है किस लेवल पर मुझे इसकी तैयारी करनी है मुझे। तो ये जो है दोनों के लिए, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। लेकिन जितनी भी एज अ टीचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव होती है, और जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम किसी भी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते हैं, दैट माइट बी द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, दैट माइट बी द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, दैट माइट बी द ट्रेनीज, कोई भी हो सकता है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव हमेशा स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए। अब स्टूडेंट सेंटर का क्या मतलब है, टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर में ये डिफरेंस है। टीचर सेंटर से मुराद ये है कि टीचर अपने लिए कि मैं कौन सा टॉपिक जो है किस हद तक कवर करूंगा। तो ये अगर ये जहन में ये रखे कि मैं ये चीज कवर करूंगा, इतने टाइम में मैं ये खत्म करूंगा, सो दैट इज एक्चुअली टीचर सेंटर। स्टूडेंट सेंटर क्या है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद जो है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब, टू डिफाइन, टू एनलिस्ट, टू इनामोरेट, टू एलेबोरेट, ये मुख्तलिफ एक्शन वर्ब जो है, दैट। तो हमेशा जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमारी स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए। सो स्पेसिफिक और measurable, these are among the two properties of the learning objectives. स्पेसिफिक तो हमने एक्सप्लेन कर दिया व्हाट वी मीन बाय द measurable। measurable का मतलब ये है कि which we can assess at the end of some turnover, that may be a module, a week, a month, जिस तरह मिड टर्म एग्जाम होता है, तो वहां पर हम इसकी एक एग्जाम लेते हैं, दिस इज एक्चुअली हम इसको मेजर कर सकते हैं। सही है। So, learning objectives, they are specific and measurable terms that clearly describe as what the students would have learned or should be able to have learned at the end of the ongoing learning activities. Suppose ये जो session चल रहा है, what will be the objective of this lecture? As हम start में हम अगर objectives की तरफ हम जाए, हमने लिखा है by the end of this presentation, the students will be able to define the learning objectives, discuss the Bloom taxonomy। तो ये जो है हम स्टूडेंट्स से एट द एंड ऑफ जो है जितने भी ऑडियंस है, जितने भी इस थर्ड बैच के मेंबर्स हैं, हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस एंड ऑफ प्रेजेंटेशन ये इसके काबिल होंगी। Another short definition of the learning objective is the statements of what the educational process hopes to achieve. Usually, the second one is as compared to the first one. The first one is more superior to the second one. The reason behind that is the second one is a little bit broader. So
मुख्तलिफ लिटरेचर में इसकी मुख्तलिफ डिफिनेशन है, बट शॉर्टली अगर हम कहेंगे कि व्हाट वी मीन बाय स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ये किस तरह होगा. सो एन इफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव दैट शुड बी स्मार्ट. अब स्मार्ट से मुराद जो है दिस इज स्पेसिफिक, measurable, attainable, relevant and time based. ए से यहाँ पे आप अचीवेबल भी कर सकते हैं. आर से जो है आप रिलेवेंट के साथ साथ जो है इसको आप रियलिस्टिक भी कर सकते हैं, कि जो पॉसिबल हो इसको अचीव करना. तो टाइम बेस्ड है, टाइम बाउंड है. अब पहले जो हमने दो को डिस्कस किया कि व्हाट डज इट मीन स्पेसिफिक, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ये किसी भी टॉपिक को, ब्रॉड टॉपिक को फिर कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है. जिस तरह अभी ब्लूम टिक्सोनॉमी, हमारे लेक्चर का नाम था ब्लूम टिक्सोनॉमी, लेकिन फिर हमने इसी ब्लूम टिक्सोनॉमी को 4-5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, जस्ट बिकॉज टू बी वेरी स्पेसिफिक. तो एक गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होगा ये हमेशा क्या करेगा, किसी भी ब्रॉड टॉपिक को इट विल ब्रेक डाउन ए ब्रॉड टॉपिक इनटू मैनेजेबल स्मॉल कंपोनेंट्स दैट वुड बी स्पेसिफिक. मेजरेबल का मतलब ये है कि ये जैसे हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जिसकी हम असेसमेंट कर सकते हैं, जिसकी हम ये दिखा सकते हैं कि यस इट हैज बीन अचीव्ड और इट हैज बीन नॉट अचीव्ड. अटेनेबल, इट इज पॉसिबल, इट मीन दैट इज रियलिस्टिक एंड द स्टूडेंट्स कैन अटेन. अब अटेनेबल का क्या मतलब है? सिंपली सपोज कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, पहले सेमेस्टर में, पहली ईयर में है, और वो एक मॉड्यूल पढ़ रहे हैं और वहां पे डायरेक्टली जो है दे हैव स्टिल दे आर अनअवेयर ऑफ द नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल जो उनकी फिजियोलॉजी है. एंड इफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि दे शुड नो अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ ए सिस्टम. अब अगर मैं उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और दैट इज थोड़ा सा हायर लेवल पे मैं गया हूँ कि जो क्लिनिकल ईयर्स पे जब वो पहुंच जाते हैं वहाँ, यानी जो मैनेजमेंट है उनकी जो ट्रीटमेंट है, या जो मैं इसकी पैथोलॉजी है इसके मैं उससे पूछ रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये शायद जो है अचीव नहीं होगा, अटेनेबल नहीं होगा. सिमिलरली रेलेवेंट जो है ये भी है कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, सो इट शुड बी रियलिस्टिक एज वेल एज रिलेवेंट टू व्हाट वी आर गोइंग टू टीच. एंड टाइम बेस्ड, टाइम बेस्ड जरूर इसलिए है कि अगर हम टाइम फ्रेम प्रोवाइड नहीं करते तो ये जो हमारा अटेनेबल है एंड मेजरेबल है, ये जो है ये फिर हम अचीव नहीं कर सकते, ये फिर उसका जो प्रॉपर्टीज है ये नहीं रहेंगी. सेकेंडली एक बेनिफिट ऑब्जेक्टिव का ये भी है कि ये कोर्स कंटेंट को किसी भी ईयर में या किसी भी स्टूडेंट्स के लिए तमाम क्लास में ये यूनिफॉर्म रहता है कि भाई हर एक की जो तैयारी होगी वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की रिलेटेड होगी, तो वो पहले से उनको प्रोवाइड की गई होंगी. तो एवरीवन विल प्रोवाइड, एवरीवन विल प्रिपेयर फॉर इट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स. तो एक तो ये है कि ये असेसमेंट में जो रिलेबिलिटी है, उनकी जो वैलिडिटी है, ये दोनों जो है इंक्रीज एनहेंस कर देता है इफ वी हैव अ स्मार्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव. सो गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट. अब आते हैं टुवर्ड्स और न्यू टॉपिक, सब टॉपिक व्हिच इज द मेन major topic of today lecture, that is the Bloom taxonomy. Taxonomy, as you all know, the science of classification. So Bloom taxonomy, why it is known as the Bloom taxonomy? Just because of that person, the Benjamin Bloom. Benjamin Bloom जो था ये एक अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट था, और ये एक यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाता था. तो 1949 में कुछ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई, और ये तकरीबन 4-5 साल तक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स हो गई. और उन मीटिंग्स और इन कॉन्फ्रेंसेस का एक ही एजेंडा था कि हम जो जितने भी थ्रू आउट द वर्ल्ड है उनके लिए हम एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज ऑफ टीचिंग जो है प्रोवाइड करिए टीचर्स के लिए, जो स्टूडेंट सेंटर हो, और हम उनकी लर्निंग की जो है क्लासिफिकेशन कर सकें. तो जब उनकी
ये कॉन्फ्रेंसेस ये एक एंड को पहुंच के वो एक नतीजा उनका निकल आया, तो उस कॉन्फ्रेंस का जो रिपोर्ट था उसका पहला हिस्सा जो था ये 1956 में पब्लिश हुआ। और चूंकि इन तमाम कॉन्फ्रेंसेस का जो चेयरपर्सन था ये बेंजामिन ब्लूम था, आ, इसी वजह से इस पब्लिकेशन को, इस क्लासिफिकेशन को, इस वर्क को, जो टीम वर्क था बेसिकली, इनको नाम दिया गया ब्लूम टेक्सोनॉमी। पहला जो इसका पब्लिश हुआ दैट वाज ओनली द कॉग्निटिव डोमेन। बाकी दो डोमेन जो है ये बाद में फिर पब्लिश हो गई थी आफ्टर द 1960 के बाद, यानी 1964 में फिर इसका इफेक्टिव डोमेन आया था। इस तरह 1970 में फिर इसका जो पब्लिश हुआ था ये सैकमोटो डोमेन। तो ये जो तीन डोमेन्स हैं, इसके पीछे जो मैन वर्क था, वो जो टीम था वो लीड कर रहा था बेंजामिन ब्लूम। दैट्स व्हाई द टेक्सोनॉमी दैट इज स्टिल इन द ऑनर ऑफ दैट पर्सन बेंजामिन ब्लूम, इट इज कॉल्ड एज द ब्लूम टेक्सोनॉमी। So Bloom taxonomy है क्या चीज? It is we can say that it is a hierarchical classification of the different learning level of the students, and these learning may be cognitive learning, critical skills learning, or the effective learning. So this Bloom taxonomy was then divided into three domains. Cognitive domain, it means what we know about something. That is just mean what we have in our brain, the vocabulary we have, that is known as the cognitive domain. The psychomotor domain, those activities, learning through which, in which there are activities in which we use our skeletal muscles. That is the simplest way to describe and define the psychomotor domain. That learning in which we use our skeletal muscle, चाहे वो किसी भी बॉडी की जो स्केलेटल यूज हो रही हो, तो वो उसको हम कहेंगे साइकोमोटर। इफेक्टिव डोमेन से मुराद ये है कि हमें जब हम कॉग्निटिव लर्निंग कर रहे हैं या साइकोमोटर लर्निंग हो रही है, तो उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस क्लास के होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ वहाँ पे फीलिंग्स होते हैं। तो ये तमाम जो वैल्यूज है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, इन तमाम को अगर हम कंबाइन करें, सो दैट इज एक्चुअली नोन एज इफेक्टिव डोमेन। और यूजुअली इफ इट इज द साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन, दोनों के साथ इफेक्टिव डोमेन जो है ये पैरेलल जाता है। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे स्लाइड्स में, हम कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड दिस इफेक्टिव डोमेन, इन तीनों डोमेन्स के हम सब डोमेन डिस्कस करेंगे कि सब डोमेन इसके क्या हैं, और उसकी एक्शन वर्क के साथ साथ एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉग्निटिव डोमेन, which is simple mean thinking, critical thinking. The Bloom taxonomy, the cognitive domain is then divided into 6 sub-level, or we can say that कि जो cognitive learning है, domain है, इसके फिर 6 levels होते हैं। और जैसा हम यहाँ पे देखें, these are being made like a stair। तो जैसे ही हम एक स्टेयर को दूसरी स्टेप पर जाते हैं, फिर तीसरी पे जाते हैं, तो लर्निंग की डिफिकल्टी एंड लेवल ऑफ लर्निंग जो है ये कॉम्प्लेक्स भी होती है और मुश्किल भी होती है। सो इट मीन कि जो इवैल्यूएशन है विच इज ऑन टॉप, दिस इज द मोस्ट difficult level, this is the most complex, and this is the high level of learning, while the recall, this is the low or lower level, as well as the most easy and simple level of learning. So these 6 levels of the Bloom taxonomy cognitive domain are recall, comprehension, application, analysis, synthesis, and then evaluation. Now, what we mean from the recall and comprehension are these. Recall mean simply we have to recall what we have in our brain. Suppose if someone asks a person, what is the largest city in Pakistan? अब ये जो सिंपल एक आंसर होगा, दैट विल बी ही विल यूज हिज ब्रेन मेमोरी की जो वोकैबुलरी है उसको यूज करेगा और उसके मुताबिक वो आंसर कर। सो ही विल जस्ट रिकॉल, उसके जहन में जो फैक्ट्स है उसी को इस्तेमाल करेगा और आंसर देगा।
कॉम्प्रहेंशन जो है फिर क्या है, ये उस आंसर की एक थोड़ी सी समराइजेशन होगी, एलेबोरेशन होगी, उसकी थोड़ी सी मीनिंग वो निकाल सकेगी। यानी इफ समवन आंसर दैट कराची इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, अब उसने ये तो याद किया है, उसने यूज किया, बट व्हाट डज इट मीन द लार्जेस्ट सिटी, किस बेस, बिकॉज वो कहेगा यस इट इज द लार्जेस्ट सिटी बिकॉज इट इज द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ पाकिस्तान, बाकी शहरों की बनस्बत सबसे ज्यादा आबादी जो ये कराची की है। सो दिस इज एक्चुअली द a little bit understanding of this रिकॉल। आगे हम डिस्कस करेंगे कि रिकॉल जो है ये दिस इज द original classification of the cognitive domain, recall and comprehension. Nowadays जो एक revised ब्लूम टेक्सोनॉमी है जो 2001 में पब्लिश हुआ था, जो अब आजकल यूज होता है, उस पर फिर ये रिकॉल जो है इट्स रिमेम्बरिंग एंड कंप्रहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे जहन में है, जो हम जानते हैं, क्या हमें उसकी समझ है कि व्हाट डज इट मीन। सो अगर है इसको हाउ, सो इट मीन वन इज सिंपल, किसी चीज को हम अगर सिंपल डिफाइन करते हैं, एंड द अदर थिंग इज उस डिफिनेशन को हम थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं, सो दैट इज सिंपली द कंप्रहेंशन। एप्लीकेशन से मुराद क्या है कि हम रिकॉल और कंप्रहेंशन दोनों को यूज करके किसी भी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आएगी, किसी भी ऐसा सिचुएशन आए कि जिसमें से हम फंस जाते हैं, और एंड वी विल यूज आवर previous knowledge and the understanding of that problem, हम इसको यूज करके उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। सो एप्लीकेशन द यूज लर्निंग इन न्यू एंड कंक्रीट सिचुएशन, जो प्रॉब्लम के लिए ये फिर सॉल्यूशन होता है। एनालिसिस से मुराद ये है कि जब कोई भी स्टूडेंट जो है ये इस लर्निंग इस हद तक पहुंच जाता है कि ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वो सॉल्यूशन की छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लेता है और एक एक कंपोनेंट में वो मास्टरी करता है। दिस इज इक्वली एनालिसिस, कि वो क्या करता है कि जो मटेरियल जो उनका सॉल्यूशन उसने याद किया है उसकी इन डेप्थ में जाएगा, उसके अंदर जो है वो उसको कंपेयर करेगा विद दूसरी सॉल्यूशन के साथ, इसको कंपेयर करेगा कि सबसे ये चार पांच सॉल्यूशन है, इनमें से सबसे आसान कौन सा है, तो ये एनालिसिस होगा। क्योंकि फिर उसके कुछ करेक्टरिस्टिक बयान करेगा, तो एक एक कंपोनेंट को वो ब्रेक डाउन करेगा और उसमें वो मास्टरी जो है की तरफ जाएगा। जब वो इसकी मास्टरी हो जाती है सिंगल सिंगल कंपोनेंट पे, तो फिर हमारी सिंथेसिस आ जाती है कि सिंथेसिस में क्या होगा कि इसका जो प्रीवियसली एक नॉन सॉल्यूशन उसके जहन में था, अब उसने सॉल्यूशन को टुकड़ों में कर दिया और इसने इसको रीसीक्वेंस करके, इसको रीअरेंज करके एक नया सॉल्यूशन जो है उसने ढूंढ निकाला है। दैट इज मैंने जस्ट synthesis of a new solution, something new from the previous one, knowledge. So this is that formulation new structure from the existing knowledge and skills. This is actually the synthesis. And then the last stage, ये जैसे जो उसने अभी नया बनाया है उसकी फिर क्या करेगा, उसकी वैल्यू जजिंग करेगा, इसकी वैल्यूएशन करेगा, और फिर इसकी ये वैल्यू किस चीज के लिए करेगा कि स्पेसिफिक न्यू सिचुएशन, जो प्रीवियसली जो सिचुएशन जो है उसमें सपोज अक्सर जो पेशेंट आते हैं दे आर नॉट लाइक टिपिकली व्हाट वी हैव इन आवर बुक्स, बिकॉज sometimes they are comorbid, they have different diseases which are combined and present, and there is a very new situation. Now the student जो उन्होंने मास्टर जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था, उसने कहा था कि इस डिजीज की जो है ये मैनेजमेंट है या ये डायग्नोसिस है, बट नाउ द पर्सन द पेशेंट हैव द डिजीज प्लस दैट डिजीज, अब क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, अपनी प्रीवियस सबको कंबाइन करके एक न्यू लह अमल तय करेगा। तो दैट इज एक्चुअली फिर एक खास मकसद के लिए फिर इवैल्यूएशन है, और वो जो सिंथेसिस उसने की है उसको फिर मुख्तलिफ जगहों पे देखने के बाद, उसको एक पर्पस के बाद, इवैल्यूएशन के बाद जो है वो इसको यूज करेगा। तो ये डिफरेंट लेवल्स है, what we call as the recall, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. ब्लूम ने एक थ्योरी पेश की थी, उसको उन्होंने नाम दिया दैट इज द मास्टरी लर्निंग। इसका मतलब ये है कि जब स्टूडेंट्स हैं एक लेवल में मास्टरी
नहीं कर पाती, यानी उसको कंप्लीट मास्टर नहीं एक लेवल पर तो दूसरे लेवल पर नहीं जाएंगे। यानी इट मीन इफ दे नो अबाउट समथिंग दे हैव टू बी shift and they will transfer to the comprehension, and if they are master in comprehension they will then go to the application. It means ये सर आप हमारी कुरिकुलम देखे ना, बेसिक मेडिकल साइंसेज में जैसे पहले उनको पढ़ाया जाता है नॉर्मल, कि सपोज हम कहेंगे जो किडनी है उसकी क्या बनाते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, फिर इसको व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी, फिर उसमें जब इनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों उनको नॉर्मल बताया जाता है, फिर वो क्या करते हैं एप्लीकेशन की तरफ आते हैं कि या जब उनको फंक्शन नहीं हो पाता तो फिर क्या करेगा। इफ ही इज अननोन टू द नॉर्मल फंक्शन हाउ ही विल डील विद द एबनॉर्मल फंक्शन। तो ये है कि रिकॉल कंप्रेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस जो है ये एक सीक्वेंस के साथ जाएंगे, और हर एक ये डिपेंड करता है कि कौन से लेवल के स्टूडेंट से आप सपोज इफ यू आर टीचिंग टू द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, इफ यू आर टीचिंग टू द ट्रेनीज, तो वहां पे आप उनसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं कि भाई द स्टूडेंट्स जो ट्रेनीज हैं जिनको अब हम टीच करने जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं कि दे विल नो अबाउट दैट ये रिकॉल और कंप्रीहेंशन जो है आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उस लेवल की लर्निंग। ऑब्वियसली यू विल एक्सपेक्ट एट द लेवल ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस कि वो जो है कि कुछ न्यू जो है करे, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव लर्न द प्रीवियस जो बेसिक तो ऑलरेडी उनको पता है। सो ये लेकिन एट द अदर हैंड इफ यू आर टीचिंग एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पहले सेमेस्टर में पहली ईयर में बैठा हुआ है और उनको आप कुछ पढ़ाएंगे, तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स होंगी, आपकी जो लेवल होगा दैट विल बी नॉट दैट हाई लेवल। जो तो ये इसलिए जो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी एक टीचर के लिए जरूरी है कि ये इससे लेवल ऑफ लर्निंग जो है ये एक टीचर एक होता है, जैसे सामने स्टार्ट में कहा कि ऑब्जेक्टिव जो है ये इसी कॉग्निटिव डोमेन पर जो है बनेंगे, और जब इस तरह इस लेवल पर बनेंगे तो क्या होगा, ये एक कंपास के तौर पर काम करेगा, इसको डायरेक्शन बताएगा कि अब हमने कौन से डायरेक्शन में जाना है। सो दैट विल डिपेंड ऑन द डिफरेंट लेवल्स। ये जो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1956, दिस इज दैट ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ऑफ द cognitive domain of the Bloom taxonomy. In 2001 this classification was revised, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि all of them they are nouns, comprehension, application, analysis, evaluation, these are nouns, but in this they all are verbs, remember, understand, apply. So एक तो ये चेंज आ गई कि all the levels of learning जो previously there were in noun form, now they are in the verb form, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating. Another जो रिवीजन मॉडिफाइड वर्जन या रिवाइज्ड वर्जन में क्लासिफिकेशन में दैट इज, इफ अगर हम इसमें देखें जो सिंथेसिस है दैट हैज बीन शिफ्टेड टू द टॉप, एंड इवैल्यूएशन जो है ये सेकंड नंबर पे यानी सेकंड टॉप सेकंड लास्ट पे आ गया है। तो ये आगे हम डिस्कस की इसकी वजह क्या है। जब ये एनालिसिस पे पहुंच जाता है जहां पे ये उसकी कंपोनेंट्स जो है इसको डिवाइड करता है, और कंपोनेंट्स डिवाइड करने की इसको समझने के लिए तो फिर इनके पास इस तरह स्कैटर्ड ऑप्शंस मौजूद होंगी, और जब भी इनकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को क्या करेगा, ये इवैल्यूएट करेगा। इवैल्यूएट मीन कि ये उसको एक स्पेसिफिक पर्पस है उसको समझेगा, और उसी को समझने के बाद जो है ये उसके लिए कोई न्यू ट्रीटमेंट, कोई न्यू सोल्यूशन जो है क्रिएट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है और वो पेशेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है। अब टिपिकली रूटीन में पेशेंट आ रहे हैं, सपोज लो बैक पेन के आ रहे हैं और उनको कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हो, फिर वो उनकी नेक्स्ट टाइम जब वो आ जाते हैं तो कुछ बेहतर आउटकम आ रहे हैं। अब एक पेशेंट आ जाते हैं जो उसको जो रूटीन थेरेपी है, जो उसको रूटीन प्रोटोकॉल है, उसकी कोई अच्छी आउटकम्स नहीं आ रहे हैं। सो नाउ ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, ये उसको इवैल्यूएशन करेगा, और जब उसकी इवैल्यूएशन करने के बाद जब वो समझ जाएगा कि नाउ इट इज नॉट ए मेडिकल सिंपल केस, देयर इज समथिंग एल्स,
जो मेडिसिन जो हमारे डोमेन में नहीं है, ये सपोज दैट इज सम ऑन्कोलॉजी प्रॉब्लम, दैट इज सम अदर प्रॉब्लम, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये एवोल्यूशन के बाद इसके लिए एक न्यू प्रोटोकॉल जो है बनाया गया। सो दिस इज द न्यू वर्जन। प्रीवियसली में क्या था कि सिंथेसिस पहले से इसके पास ऑप्शन होते थे, यानी न्यू सोल्यूशन होते थे, और न्यू सोल्यूशन को फिर ये मुख्तलिफ प्रॉब्लम को इवेल्यूएट करने के बाद में फिर ये इस्तेमाल करता था। तो ये है कि मुख्तलिफ सिचुएशन आ जाते हैं, तो एक लर्नर जो है हर किस्म सिचुएशन को उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि ईच एंड एवरी टाइप ऑफ जो सिचुएशन है ये उसको हैंडल कर सकेगा। तो ये उसकी एक्सपर्टी होनी चाहिए, उसकी लर्निंग उस लेवल की होनी चाहिए कि इफ ही और शी इज हैंडलिंग any type of any sort of complex situation, he or she will be able to handle that. So again, the meaning of all these subdomains is exactly similar to the previous one. Like remembering Mikyogi, he will just recognize and recall the facts which he have in their brain, in their vocabulary. Understanding में क्या होगा कि he will just try to understand what I'm saying. He will just understand what the facts mean which he or she have in that vocabulary. What does applying mean? Applying the facts, the rules, the concepts, the ideas, that vocabulary, each and everything which they have for a problem is a solution for some problem. Analyzing, break down information which which they have learned in these three levels into component parts, into small parts, and then study and compare and to contrast these with others, to compare with others, to differentiate between two or more than two different components or different ideas. Evaluation, judging the value of information and ideas, and then create combining parts to make a new whole. जो एनालाइजिंग में उसने जो ब्रेक डाउन की थी, इसी को वो रीअरेंज करेगा लास्ट में, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएटिंग एंड that judging the new situation which उससे पहले उसने कभी फेस ही नहीं किया, ये पहली दफा इसको कोप कर रहा है, पहली दफा इसका सामना हो रहा है, तो वो क्या करेगा, प्रीवियस नॉलेज उसकी नॉलेज इस लेवल की होनी चाहिए कि ये जो पहली दफा इस प्रॉब्लम को सामना कर रहा है, ये उस लर्निंग को यूज करके इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जो है ढूंढ निकालेगा। सो ये जो ढूंढ निकालेगा, दिस इज एक्चुअली द लास्ट लेवल ऑफ लर्निंग विच इज एक्चुअली द क्रिएट। हॉस्पिटल में ये होता है कि रूटीन जो पेशेंट आते हैं, सो जो ट्रेनीज होते हैं, जो टीएमओज होते हैं, वो इसको ट्रीट करते हैं। बट व्हेन देयर इज अ क्रिटिकल सिचुएशन, फिर सीनियर जो टीएमओ है या जो सीनियर डॉक्टर है, जो सीनियर फिजिशियन है, जो ऊपर है, जो लेवल होते हैं, उसको फिर बुलाया जाता है, बिकॉज दे हैव better understanding of that in situation, they have their उनके पास knowledge, learning बहुत ज्यादा होती है, that's why they can create a new protocol for that new critical situation. So that is the reference to the original one, and this is the reference to the new one, which is the revised or modified Bloom taxonomy. The two persons which work, which and they were the lower Anderson and they were क्रेथवाल। क्रेथवाल का जो है इफेक्टिव डोमेन में भी बहुत काम रहा है, आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। क्रेथवाल जो ब्लूम का इफेक्टिव डोमेन है, उसको क्रेथवाल भी कहा जाए, क्रेथवाल टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। So that is the knowledge is being replaced by remember, comprehension by understand, application by apply, analysis by analyze, synthesis by evaluate, and evaluation by the create. These दोनों जो है एक दूसरे के साथ interchange हो गई। So that was published in 2000 and the original one was on the 1956. अच्छा, ये एक अक्सर हम कहते हैं ना कि ये जो लेवल्स है, इसको हम शॉर्टली क्या कहते हैं। सो डिफरेंट लेवल्स हमने यहाँ पे डिस्कस की, जैसे यहाँ पे देखे ना स्टेप्स बनी हुई है, तो दिस इज एक्चुअली नोन एज द C1, दिस इज C2, C3 एंड सो ऑन C6। तो यहाँ पे जब हम कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो उस ऑब्जेक्टिव को हम पहले से ये
लिखेंगे उसको पहले से हमारे माइंड में होनी चाहिए कि किस लेवल का ऑब्जेक्टिव हम बना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हम C3 कर रहे हैं, C6 कर रहे हैं, C2 कर रहे हैं, C1 कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं। तो जब यूजुअली डिपेंड करते हैं हमारे लेवल ऑफ स्टूडेंट्स पर। अगर हमारे स्टूडेंट जो हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट के हैं तो वहां पर मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव दैट शुड बी एट द हाई लेवल। बट इफ हमारी स्टूडेंट जो है, इफ वी हैव द बेसिक मेडिकल जो साइंसेस है उसके स्टूडेंट्स हैं, यानी इनिशियल सेमेस्टर्स में है, तो फिर क्या होगा, इनिशियल ईयर्स में है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स हमारी इस थ्री में होंगे, यानी दे विल जस्ट रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड की लेवल की होंगी। तो C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6, इनको हम शॉर्टली जो है C1, C2, C3 भी कंसाइज समराइज कर सकते हैं। कंसाइजली you can say that there are three subdomain of the cognitive learning. This is C1, the C2 and C3. C1 में सिर्फ रिमेम्बरिंग आती है एंड वी कैन कॉल इज रिकॉल। C2 को हम यूज नाम दे सकते हैं और इसमें जो तीन लेवल्स है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग, ये तीन उसमें आ जाते हैं। जबकि लास्ट टू इवोल्यूशन एंड क्रिएटिंग जो है ये C3 में आएंगे, क्रिएट में। तो ये दे हैव द नॉलेज, दे विल यूज इट for the routine problems, and they will then create if they have a new problem. So this is known as the C1, C2, C3, while C1, C2 दी इसको हम C1 से C6 का नाम जो है देते हैं। अब आते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट कि हम एक एक को एक एक एक्शन वर्ब जो है ये डिस्कस करेंगे और साथ जो है हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे नॉर्मल डेली लाइफ से, ताकि इस लेवल जो है इसकी और भी हम हमें समझ आ सके। तो रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी हम इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि 2001 के बाद जब ये रिवाइज हो गया तो थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली जो है दिस रिवाइज्ड एंड मॉडिफाइड टेक्सोनॉमी इज बीइंग यूज्ड। इसलिए हम रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी की जो लेवल्स है उस पर बात करेंगे। सो लेवल वन पहला जो है रिमेम्बरिंग, जो प्रीवियसली क्या था, रिकॉल था। तो रिमेम्बरिंग से मुराद ये है कि दे विल जस्ट रिकॉल व्हाट दे हैव इन their brain. So this is the most basic, requiring the least amount of cognitive rigor. This is about students recalling key information, for example, the meaning of a word or definition. अच्छा, इसकी एक्शन वर्क के एग्जांपल जो है, there's arrange, define, describe, list, match, name, order, recall, reproduce, etc. Like we can say that enumerate, enlist. So these all are the that which we are expecting from uh, first year students, first semester students. यहाँ पे हम एक मिसाल देंगे और ये मिसाल जो है, एग्जांपल जो है हम एक एप्पल का देंगे। और ये जितने भी लेवल्स हैं ये हमने डिस्कस की कि जो रिमेम्बरिंग है, फिर इसके अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है, एनालाइजिंग है, उसके बाद जो है इवल्वेशन है, इवल्वेटिंग जो है, एंड देन इज द क्रिएटिंग या क्रिएट। ये तमाम जो 6 लेवल है ये हम एप्पल के इर्द गिर्द जो है इसकी मिसाल डिस्कस करेंगे, किस तरह जो है ये एक लेवल दूसरे लेवल से मुख्तलिफ है। तो अगर हम रिमेम्बरिंग वाला पहला लेवल जो है इसकी एप्पल का जो एग्जांपल दे कि किस तरह हम देंगे लेवल 1 रिमेम्बरिंग का, तो वी कैन आस्क समवन दैट नेम 3 कॉमन वेराइटीज ऑफ एप्पल, एज वी नो दैट different varieties of apple they are available in the markets. So might be we don't know about the name of them, but we know about them. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ ये है कि उनके मुख्तलिफ किस्म जो होते हैं, तो कोई भी नाम, 3 नाम जो है कोई बताएं। अगर उन 3 नाम में से जो है इनमें से हो सकते हैं, लाइक वी हैव Pink Lady, the Bromley, the Red Delicious, Golden Delicious, the Cox Apple, the Bourbon, the Granny Smith and the Royal Girl. अब ये मुख्तलिफ varieties है। स्टूडेंट को आपने पूछा उनको, they were unable to have 3 names of any variety. तो आपने इनको जो है ये सिखाई ये varieties,
You are expecting कि इस सिखाने के बाद जो है the students will be able to name 3 different varieties of apple. So they will just name them pink lady, bramley or golden delicious. Now the question is कि हम उनसे ये expect नहीं करते कि what is the difference between pink lady and the golden delicious, या which one is most healthier as nutrition के best पर, so just name them. So this is the level 1 remembering. Level 2 जो है understanding, which mean it is to do with students demonstrating an understanding of the facts remember. At this level, the students who recall the definition of a word, for example, will also be able to show understanding of the word by using in the context of different sentences. Action verb which we can have for the understanding, there might be some of them are the classify, discuss, explain, identify, report, summarize, etc. सेम एग्जांपल आप एप्पल जो है किस तरह उससे लेवल 2 लर्निंग हो सकती है, एक एक्टिविटी हो सकती है. समराइज द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गोल्डन डिलीशियस एप्पल एंड ग्रैनी स्मिथ एप्पल. अब यहाँ पे हमने उनसे जो क्वेश्चन किया था कि नेम 3 एप्पल, अब उन 3 में से उसने 2 नाम बता दिए और उसमें से एक जो था ग्रैनी स्मिथ था जो ग्रीन वन, एंड द गोल्डन डिलीशियस. नाउ इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, यानी how they are the two varieties, why they are different, what is the तो ये सिर्फ उनमें कैरेक्टरिस्टिक बताएगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. सो दिस इज दिन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे नो. उनको फैक्ट क्या याद थी उनको कि भाई 3 वेराइटीज, दैट इज पिंक लेडी है, गोल्डन डिलीशियस है एंड द ग्रैनी स्मिथ है. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the characteristic of the golden delicious apple and the this granny smith apple. So that will be an example of the remembering and understanding, which is the level 2. अब सम वी हैव, हमने उनसे कहा है कि भाई आप क्या करें 3 नाम उनको, लेकिन यहाँ पे अगर आप दिखाएं उनको, दे विल जस्ट यूज देयर प्रीवियस नॉलेज दैट which type of pink lady is among these apples. So if he is known to the apple, there is a pink lady, and that is, so he will be able to identify that this one is the pink lady. Level 3, which is applying, which is as we have discussed, the use of the 2 level, the previous 2 level for a solution of a problem is actually known as the applying. So it is concerned with how students can take their knowledge and understanding, which is the level 1 and level 2, applying it to different situations, different circumstances. This usually involves students answering question or solving problem. So they will answer the question or solve the problem on the basis of what they know and uh, what is their understanding of the facts which they have. Examples of action verb for the level 3, that is apply, calculate, prevent, demonstrate, interpret, show, solve, suggest, etc. So now if they are able to name, they are known to that pink lady is a variety of apple. They are known to what are the characteristic, what are the nutritional facts of the pink lady. So now how they will use it in the problem. There is suppose a question we can ask: would pink lady apples prevent scurvy, a disease caused by a serious deficiency in vitamin C? Now, if the person is known to the fact that pink lady is rich in vitamin C, so he will answer yes. It is. It can be used as a management tool for the treating the scurvy because it is very rich in vitamin C. On the other hand, if the student is known to the fact that pink lady is a variety of apple which don't have vitamin C in it, so on the basis of that knowledge, he will answer this question. No, pink lady can be used can be as a prevention tool for the preventing vitamin C deficiency scurvy because I don't have any vitamin C. So this is actually the applying. Now we will just go to the next level. This is the analyzing. It's about students being able to draw connections between ideas, thinking critically, to break down information into the sum of its part.
Examples of action verb: analyze, appraise, compare, contrast, distinguish, explore, exploring, infer, investigate, etc. Now they are able to use their basic knowledge and understanding of any fact or any material as a solution for some problem. Now they will just break down this solution into different components, and then they will analyze them. They will appraise them, good or bad. They will compare them with some other components, some other solution. They will have a contrast in it. They will distinguish between this and that and that. They will explore more in this solution. So how we can use this level analyze for that apple, that same example. So there would be compare and contrast four ways of serving food made with apples and examine which one have the highest health benefits. अब यहाँ पे if we, this is that action verb examine, which is an action verb for the analyzing. Similarly, if we have another two action verb which we have used here, it is compare and contrast. These are the two action verbs for the that level for analyzing. So students, if they are known to the solution, so they will have the components, they will have the ability to break down that whole solution into small components. So these are the different apples, as we can see, and different their cheese. This is we can say here is a chocolate, and dry fruits, different things we have, peanut butter, honey, जो भी है. So that is actually they will just have different recipes, and they will compare all these and will decide which one is more healthier than the other, and they will decide and contrast as well. So this is actually the level 4. Level 5, evaluating. Again, I will say that evaluating was the last and sixth level at the original, but in the revised Bloom taxonomy, this is the second last. It is reached when students can make accurate assessment or judgment about different concepts. Students can make inferences, find effective solution to problems, and justify conclusions while drawing on their knowledge and understanding. And different action verb like argue, assess, critique, different, evaluate, judge, justify, etc. Now, uh, they can have a problem, and the problem is they are going to bake a pie, apple pie bird. They are known to the different varieties of apple, and they are known to the characteristic of each and every apple variety, but they are unknown that which kind of apple are best for baking a pie. So they will explore it, and now they don't have the knowledge, so they will just try for it, every different variables, different varieties of the apples, and at the end they will just try a conclusion, and at the end they will be master, and the next time they will use the same solution for that baking an apple pie, which is actually a dessert. So, which kind of apples are best for baking a pie and why? So, as generally, the different apples which are the Granny Smith apple that is most commonly used for the apple pie, because they are very tough, and after baking again they do not much like the other soft apples. So he जो different recipes है, like the Gordon Ramsay, which is actually a British chef है, या the Grandma Apple, yes, Smith and Kitchen, or the King Arthur Flo, which is a baking company in America. So ये जो different levels है, ये level 5 है. फिर हमारा क्या है, evaluating है. Now they are facing a new problem. They are going to bake a dessert, or they are known to the varieties, they are known to the characteristics, but they are unable to know that which one is best now for their baking a pie. So what will be the last creating? It is the ultimate aim of the student's learning journey. This is the last level
that is the final level of the Bloom taxonomy. This is the last level of learning. After that, the students, they are expert on that concept. At this final level of Bloom taxonomy, students demonstrate that they have learned by creating something new, either tangible or conceptual. That can be खुद बहुत हो जाता है या accidentally जो है हो जाता है. This might include, for example, writing a report, creating a new recipe, revising a process to improve its results, or formulating a new treatment protocol. As we discussed this phenomena in detail in the previous slides. So example action verb for this creating, that is the compose, convert, construct, create, devise, generate, organize, plan, or produce. Now, they are known, the evaluation, they are known to the fact that suppose that that type of apple is best for baking a pie. Convert a recipe to new recipe by replacing your choice of ingredients. Argue for the health benefits of using the ingredients you choose versus the original one. So now this is a much higher level of fact about the apple. So that was a summary of all the 6 levels of the cognitive domain of the Bloom taxonomy, which we discussed in sense of apples. But if we summarize all these Bloom taxonomy, that is from simple to complex, that is from easy to difficult. जैसे हम रिकॉल से क्रिएट की तरफ जा रहे हैं, सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है ये इंक्रीज होती है, जो कम्प्लेक्सिटी है ये इंक्रीज होती है, सिंप्लिसिटी जो है ये रिड्यूस होती है. So it mean if we are dealing with students of higher level, so हमारी जो level of learning that should be above applying. But if we are dealing with students of the undergraduates initial semesters, then obviously most of the objectives जो होंगे that will be of the C1, C2, C3. So another rule of the Bloom taxonomy is that which we discussed earlier as well, that is the mastery learning, that students should have a mastery, they should be expert, a master at a single level, and after mastering that level, then they can shift to the next higher level. So moving up the taxonomy, students become more knowledgeable. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, they are becoming known to more and more facts. Like start में हमने उन सिर्फ varieties के बारे में पूछा था, फिर हमने comparison की बात की, एप्पल की varieties के बारे में पूछा था, फिर हमने इसकी characteristic की बात की, फिर हमने इसकी beneficial with solution for some problem treatment के बारे में, फिर हमने उसकी baking, यानी पूरा डिटेल जो है. सिमिलरली किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम शुरू करते हैं तो हमारी, अगर हम उनसे लेवल 6 एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये पहले से पता होनी चाहिए कि लेवल 5 तक दे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, दे ऑलरेडी मास्टर्ड इट. इफ द स्टूडेंट्स, जैसे अगर एक स्टूडेंट है उसको जजमेंट जो है, उसको न्यू सिचुएशन का फेस करने का जजमेंट का वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो न्यू ट्रीटमेंट या न्यू प्रोटोकॉल या न्यू सॉल्यूशन मैनेजमेंट जो है प्लान उसके लिए नहीं बना सकेगा. इसलिए अक्सर जैसे हमने एग्जांपल पहले डिस्कस किया कि हॉस्पिटल में एक क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है तो सीनियर को बुलाया जाता है, बिकॉज उनकी अभी तक उस लेवल ऑफ लर्निंग नहीं होती कि इस सिचुएशन को जज करे, इवैल्यूएट करे, और इसके लिए फिर जो है प्रीवियस नॉलेज को रिकम्बाइन करके, रीअरेंज करके, रीसीक्वेंस करके एक न्यू प्रोटोकॉल, एक न्यू जो है कॉम्बिनेशन एज अ होल जो है बना ले. सो दैट इज स्टूडेंट जितनी जो ऊपर जाएंगे लेवल पे, उनकी उतनी जो है नॉलेज जो है ज्यादा होंगे. दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स ऑफ इनिशियल सेमेस्टर that have less knowledge as compared to the students of the upper semester develop an improved understanding of the content they are learning. Obviously, lesson objectives, question and activities, action verb are the basis, and that's why we should have a long list of the action verb for each level of learning. Next lecture, inshallah, we will discuss about the questions, sample questions, and as well as some sample activities of all level of the cognitive domain of the Bloom taxonomy, like this one. Remembering examples question: what happened after how many
What was it that? Can you name the? Describe what happened at? Who spoke to? Can you tell why? Find the meaning of what is, which is true or false. So these are some of the questions which will be relating to the level one remembering of the cognitive domain. We will go to the next slide and we will discuss these questions and activities of each level in the next session. Thank you so much to all of you.